यो भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छा चल रहा होगा। क्या हाल चाल है पुट्टो, कैसा जा रहा आपका दिन, महीना, हफ्ता, ये साल। उम्मीद करते हैं अच्छा ही जा रहा होगा। वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम ऑफ डेथ स्ट्रैंडिंग 2। तो जैसा आपको पता है, थोड़ी सी ऐप हो गया था मेरे संग। मतलब यार पता नहीं, मन सा नहीं हो रहा था यार स्ट्रीम करने का। मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा आप लोगों से, बट हाँ यही था कि मेरा मन सा नहीं कर रहा था स्ट्रीम करने का। शॉर्ट्स डालते ही रहे। वीडियो भी एक बनाई है मैंने, वो अपलोड करना भूल गया। मैं सोच रहा हूँ उसको मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को कर दूँ अपलोड। देखते हैं, है ना। और मैं सोच रहा हूँ गोस्ट ऑफ सुशीमा का कंटेंट अब पॉज करके डेथ स्ट्रैंडिंग, पर डेथ स्ट्रैंडिंग का कुछ मिल ही नहीं रहा है यार। तो देखते हैं अभी, है ना। डेथ स्ट्रैंडिंग आगे करते हैं भाइयों, जहाँ पे हमने छोड़ा था। हमको वो डिलीवरी करनी थी ना मैक्सिको में, तो चलो भाइयों वो करते। आओ। Buen dia, Sam. ID confirmed. Welcome, Sam. Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. भाई ऊपर का व्यवस्था कैसे बनेगी यहाँ पर। Only gonna get harder. और भाई यहाँ तो सिस्टम ही थोड़ा कीड़ा सा हो रखा है। Come on, Sammy boy. अरे 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 Seriously?
पूरा Okay. भाई। भाई जी अब कैसे चढ़ाया जाए? अब तो अब गंदा फंस गए बहे Yeah. भाई। Come on. कहाँ है? इधर जाना है भाई। कुछ वो नहीं है। पीसीसी लेवल। अब भाई ऊपर कैसे चढ़ूं मैं? गलत फंस गए अपन। ले भाई। Get it together. Oh, almost lost it there. ब्लड पाउच कितना है अपना? ब्लड बैग है अभी तो इसमें। कंटेनर इसकी स्प्रे भी है। तो सही चल रहा है। So far, so good. भाई दिक्कत तो आई इधर चढ़ने में। Grin and bear it. स्पैम मार दे रहा हूँ मैं तो बिल्कुल क्लाइंब पे। हल्ले हल्ले हौले हौले।
Hell yeah. Construction process now complete. Don't worry, you got this. Sunset will be occurring shortly. Come on, Sammy boy. Must be their territory. I will always support you. क्या ये रिपेयर स्प्रे है? नहीं चाहिए भाई.
क्लाइंबिंग एंकर नहीं चाहिए। Now leaving chiral network coverage. Two wheels up. Recover all current density gauges stolen by the bandits. पर है कहाँ? किधर स्टोर करके रखा है? Get it done. ब्लड बैग चाहिए। स्पेशल अलॉयज ये क्या चीज होती है भाई? बूट्स हैं क्या? All designated cargo successfully recovered. Proceed to delivery destination for processing. क्या हाल चाल है खंड भाई जी? Feeling good. Commencing route creation. Delivery route finalized. भाई इधर से तो नहीं जा पाएंगे अपन। चलो कोशिश करते हैं। क्या हाल चाल है अखंड भाई जी?
पूरा भाई घूम के ही चल लो यार, कौन चढ़ेगा इतना वो। अबे नहीं यार, कॉपीराइट पड़ेंगे ये म्यूजिक पे। साला कॉपीराइट हटाते फिरो यार, बकचोदी अलग है। अरे बच के वे कंटेनर इसलिए मानना पड़ जाएगा। लेट्स गो। आ गए भाई, Good evening, Sam. ID बड़ी confirmed. बातचीत हो Welcome, गई Sam. अब। Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Chiral decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. लो भाई, Hola, you're Sam, right? I होला assume you're होला। here to drop off that stolen cargo of ours? With those chiral density gauges in our possession, we'll be able to determine where BGs are likely to appear in the future. So, let's get a look at those containers and see if we're good to go. Esta perfecta. I'd swear it had never been outside. I just have to say that you're in. Looks like our chiral density gauges are. So? लो भाई, एनिमेशन सही बताया है इसमें। ब्लड ग्रेनेड, स्ट्रक्चर डेटा। Now displaying your current porter grade. It's high time we got on the chiral network. Our BT research should go a hell of a lot faster now. We just shared some data with you that'll let you fabricate blood grenades, a kind of anti-BT weapon, and build timefall shelters too. I think you'll find both very useful. The chiral density gauges you brought us have been safely integrated into our systems. We can resume all distribution center operations and get back to business as usual. A lot of lives are gonna be saved thanks to you. By the way, you're planning to visit the research lab, yeah? You'll have to pass through some dangerous territory then. We'll do a quick survey of the chiral density, so you might not want to leave right away. Let's not forget that you... Tell you what, we'll just... मेरे को एक चीज समझनी है इसमें यार, करके देखते हैं, रुको बूट्स के संग खेल के देखेंगे।
okay? I'm fine. You guys? The facility's intact, but the research lab might have taken a hit. The local chiralium levels appear to be rising. Better hurry over there, Sam. Head to the delivery terminal upstairs and check their order. तो भाई मॉर्निंग में ही करेंगे सारी शिफ्टें भाई, रात वात में नहीं करते। गो टू सरफेस। चलो भाई नेक्स्ट ऑर्डर उठाते हैं। Departing facility. Sam, however, I know you've got... Don't. Seems like my doom's low. Steer me in the right direction. But you're... तुम कंसोल प्लेयर हो ना? हाँ। क्या हो गया? I'll brief you on the details. What? अबे बकवास मत कर तू, पहले मेरे को यहाँ पे चीजें भाई, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। Rika, to increase the stock of my that can be used to this location at claim material from facilities। अच्छा यहाँ से materials है, material हो गई क्या? हो गई शायद। ब्लड बैग तो 2 हैं अपने पे। मेरे को एक चीज जाननी है।
ये वाला है ना ट्रांस। Defeat the BTs near former your research lab. अरे All यार right, Sam. You good to go? The new BT area we've identified is located in साला these इनको ruins. कैसे मारूंगा मैं? If we don't do anything about it, eventually someone's gonna trigger a void out. So to prevent that, we need to जल्दी neutralize शादी कर all फिर the तुम। BTs in this area. There's no shortage of collapsed buildings and hiding क्या spots करूं? there. जल्दी And the शादी करनी timefall है isn't मतलब letting up समझा नहीं anytime मैं। soon either. Since you'll also have cargo for the research lab with you, take care not to let it get damaged. An aid request for if you build one, and if you stack, so if you got you. Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized. बुलेट्स मिल गई ना। अब आ जाओ बेटे, फूल है Order तेरा भाई। accepted. Thank you. Please give it your all. रुको पहले मुझे देखने दो। एंटी ह्यूमन भाई, एमओ स्विच नहीं होती इसमें। अच्छा, कोई भी टारगेट से हो जाएगी। ओके, तो इसको ही इक्विप रखते हैं अभी हम। Remember to rest, Sam. You take care. Disengaging weapons restrictions. Take care.
यहीं हूँ, इंटेंस से डिलीवरी चल रही है। Fuck this. Commencing route creation. Delivery route. Defeat BT in the BT area northeast of the expand. कुछ हुआ?
लेट्स गो भाइयों, देख रहे हो प्रोफेशनल है वे। Normal range. BT threat neutralized. Please deliver your cargo to the research lab. पर डिलीवर क्या करना है? अच्छा, एमपी बुलेट्स। Commencing route creation. Delivery route. ये क्या हेडेक पिल्स? ये नहीं चाहिए। जिस चीज की भाइयों जरूरत नहीं है अभी वो क्यों ले? सही बात है नहीं? एक तो ये बात बात पे जो ये म्यूजिक चलता है ना भैंस की आंख, अलग डर लगता है। कॉपीराइट हटानी पड़ेगी अब जाके भाई। तो एक बस वो गन और मिल जाए बीटी मारने वाली ना, वो और अनलॉक हो जाए फिर तो मौज ही मौज है भाइयों। फिर नहीं मुझे डर लगना किसी से भी। You should have more faith in yourself. अभी क्या ना पूरा भाई पूरे का पूरा वो करना पड़ता है। आप कंटेनर स्प्रे देखते हैं कहाँ पर है? Buen dia, Sam. ID confirmed. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Long time no see, Sam. Though, anyway. Now that's a delivery done right. I appreciate that you're always striving for perfection. We never doubted Perfection you'd show. तो है We're ready भाई। for you to link us up with your Cupid. Once you do, एंटी-बीटी इफेक्ट एडेड। Now displaying your current porter grade. So, Sam, don't suppose you remember who I am? The name's Alex. I used to work at the weather station. I was a bridges. So, and sure, this. It's hard to know when this. So for now, well.
2 डिलीवरी करती हैं आज तुम्हारे भाई ने। अच्छा अगर हम नहाते हैं एंड ऑल हैं तो रिफिल हो जाती है अपने आप एमओ वगैरह ना सब। हम मल्टीपल भी बना सकते हैं मेरे ख्याल से एम वो जो है। भाई मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है इसको। It's been too long, Sam. वो है क्या ये You were a डेडमैन good है friend to कौन? me. One I could never अरे इसका forget. नाम क्या था? डेडमैन ही नाम था। Which is why I took steps to ensure that this message would only play upon your arrival. The sensors were set to scan for your biometric data. A simple enough trick. Now, this was originally a geophysics laboratory established for the study of earthquakes. ओ भाई इसमें फिर And for that reason, it holds a wealth of documentation on gatequakes, tar currents, and placates. As well, I discovered भाई ये as डेडमैन research यहाँ data पे on the other कर side. क्या रहा है? Now, what I'm about to tell you, I learned after I came to this place. Imagine that this is the lab. Though it's relatively close to the northern tip of South America, the continent is entirely cut off from us by a tar belt. And so we have no idea what's going on down there. Nor do we know the state of any continent other than our own. The researchers here were trying to establish contact with the rest of the world. They were well equipped to do so, as the facility had once been used to launch research satellites. So they tried launching a variety of probes and drones in the hope of obtaining observational data, with no success. The Earth, you see, is shrouded in a thick layer of chiralium that renders electronics inoperable at altitude. So they tried sending ships across the ocean. Oh, yes. Oh, but that failed too. The high concentration of chiralium in open water proved too मेन मुझे लग रहा है corrosive, कायरेलियम invariably causing them to sink. But then the researchers found some rather rare birds on their doorsteps. Birds not native to the region. Nice birdie, nice birdie. And that, my friend, was just the beginning. Not far from the lab, they discovered a strange anomaly. Well, the surrounding area was heavily contaminated with chiralium. Yes. This is beautiful. The researchers would later dub the anomaly a plate gate. Further investigation revealed that it came into existence when you began to expand the chiral network across North America, and that the gate grew larger in tandem with the network itself. What started as a tiny fissure in space became so much more. The researchers duly installed cameras to study the gate and its surrounding area. Now, to their surprise, they caught footage of some unusual marsupials. Yes, a kind you wouldn't expect to normally encounter in Central America, like the birds. But to confirm their suspicions, they sent an autonomous robot through the gate. The soil samples it collected were consistent with the archived geological data from the southern भाई hemisphere. कद्दू कुछ नहीं समझ में आ रहा साला साइंटिस्ट का चोरा। Not long after, several men and women came through the gate. They spoke English. And they confirmed that they had indeed come from faraway Australia. We finally knew the world outside North and Central America had survived.
Ours was not the last bastion of humanity, but Australia had suffered the Death Stranding too. Undeterred, the researchers began working closely with Bridges and conducted a series of tests, paving the way for an expedition to Australia that would lay the groundwork for chiral network expansion. After they had first installed surveillance equipment, that is, so that the gate could be monitored from the Mexican side, a necessity to this day as Australia is not yet connected to the chiral network. The UCA may not have dreams of conquest and control, but they aren't about to let just anyone use the gate. Indeed, that's one of the reasons they were so determined to connect Australia to the network in the first place. Australia. Well, I suppose that's all I have to say about the plate gate. There's something else that I need to tell you, though. Something far more important. Mind if I pause it here? I have to go take a shower. Gate quake detected. Sam, a gigantic BT just showed up outside. We're prepping weapons for you now. Access the terminal up top and take whatever you need. We're counting on you. Manifestation imminent. Access the delivery terminal to make preparations for combat. हाँ भाई, कुछ सिस्टम कर ले रहे हैं। पहले तो जो हमको नहीं चाहिए, कंटेनर रीस्प्रे तो चाहिए यार। ब्लड ग्रेनेड, ब्लड ग्रेनेड भी ठीक है, चलो।
भाई कौन सा आ रहा है, देखें तो सही कौन है, कौन भूतनी। अरे बैच। ये तो अटैक ऑन टाइटन का जो बना लिया है ना इन्होंने सिस्टम। आरपीजी नहीं है कुछ, एक पे मार तो हो जाए ये। क्या है भाई, डॉज कैसे करूँ भाई। क्या था यार ये। बेटे हम पे गोल्डन पिस्ट मरा नहीं क्या ये, मरा भाई, मरा भाई। भाई मुझे लगा वापस जिंदा हो रहा है क्या अभी ये। Sam, this is Alex. You did it! We've confirmed the chiral crystallization of the giant BT. Local chiral density is already dropping fast. I think we can all rest easy for now. You've saved a lot of lives by killing that monstrosity. We won't forget that. Head to the research lab's private room and take a break. You've earned it. कहाँ जाना है, फिर से वहीं जाना है। फैब्रिकेट कर देंगे, फैब्रिकेट कर देंगे, फैब्रिकेट करूँगा। पहले मैं रेस्ट करके देखूँगा, अगर एमो रिफिल हो जाती है फिर फैब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ही है पता नहीं। भाई वहां से यहाँ खींच लिया रामी ने, बिल्कुल कोपचे में। और तुम्हारा भाई भी कम हरामी नहीं है। भाइयों यार ये जुलाई ना बहुत बिजी मंथ है, इसलिए ना दिक्कत हो रही है, समझ लो भाइयों। हाँ पहले रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। अगर रेस्ट करने से रिफिल हो रही है तो फिर क्या, अभी क्यों करे फैब्रिकेट भाई उसको। भाई डॉज से होता था।
इससे रिलोड है, इससे ये है, इससे जंप है, तो ट्रायंगल से था क्या डॉज? इससे क्या होता है? कर ले बेटे, आराम कर ले, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। As I said before, there's something I need to tell you. It's about Lou. You see, बताओ। after you left Bridges, I decided to do a little digging into BB-28's past. That is, Lou's. I found the BB decommissioning records. Now, according to them, BB-28 was flagged for disposal and subsequently incinerated 4 years ago, long before you and Lou first met. That's BB-28? This is the child officially identified as BB-28. But if you look closer, Sam, you see at once that it can't possibly be Lou. Right there at the elbow, where the birthmark should be. Nothing. Which means we have another BB-28 on our hands. The one with whom you memorably went west and back not so long ago. That is Lou. Per regulations, the serial number assigned to each BB was unique. No two units should have ever been assigned the same one. I've cross-checked the details with the most up-to-date entries in the UCA database. And indeed, there is no reason to believe BB-28 survived. All of which can only mean, Sam, that the bridge baby you carried with you on your journey across America, Lou, was never recorded in the official database. So, where then did Lou come from? Right now, your guess is as good as mine. But as worrying as that sounds, this could actually be to your advantage, since it's functionally impossible for the UCA or Bridges to track a BB of which they have no record. Which is lucky, because if they did know about a BB that could live and grow outside the pod, they'd want to secure it for study. So take comfort in the knowledge that they don't, that you're free, that you can bring up Lou in peace. How is it, by the way? The two of you living as a family. Right. I have gifts for you. A few things to take back home. An assortment of vaccines to be administered as your child grows up. We want Lou to live a long and healthy life. And it's natural for children to be afraid of shots. Maybe this will help put Lou's mind at ease. भाई लौंडा तो बढ़िया है। A token of my affection. You can collect it via the delivery terminal when you leave. I wonder how big Lou will get. Anyway, there's one more thing I wanted to share with you. बट अब मेन काम बताएगा, देखिए। As you know, everyone is meant to go to their own beach when they die. But unlike most people, I wasn't born from a mother. I was born from an artificial womb. Transplants provided the organs I never had. I was incomplete and had no beach, I believed. But I wasn't about to accept that. I went back home to study the Ha and Ka and the beach. I threw myself into my work, Sam. I tried. बराबर। But I think I've done all that I can. In the end, I'm still a patchwork Frankenstein's monster. One that's just about worn out. As a doctor, I can tell you, I don't have long left. So I've devoted my remaining time to research. That's why I'm here, Sam. Where I can focus on the beach. There's so much data here, Sam. On beach formation, अंकल जी का समय jumping करीब via है। beaches, the relationship between the beach and plate gates. All the evidence you could ever wish for. Not enough to solve every mystery, perhaps, but enough for me to make an incredible personal discovery. That I have a beach after all. It doesn't matter how I was born. I have lived as a human. And thus do I possess a beach
like any other. I am not a machine, but a person with a ha and a ka and a beach to go with them. ठीक है, भावनाओं की पूरी कदर है चच्चा तुम्हारी. Lastly, I have a confession for you, along with a heartfelt apology. I told you once that I didn't have dooms. But that's not actually true. Not that I was lying, you understand. I just didn't know. It was only after I found my beach that I realized. Chiral allergic reaction. I can feel it getting closer. I'm off to the beach, Sam. To my beach. Take care of yourself. चच्चू चले गए क्या? देखने में तो ऐसा ही लग रहा है. सैम भाई रो गए भाई, पक गए ना बिल्कुल ही. मैं तो पक गया इसलिए रो रहे भाई वो. Did you know about this? No. It's news to me too. I'm sorry that that man is gone. But he would have Dead been man pleased bhai that wo he same managed to extend the UCA network all the way to his lab. Thank you, Sam. चलो भाई लू के पास Guess अपना I'm काम. homeward bound. Missing little Lou that badly? You know I am. Come on back, Sam. Lou misses you too. उसके लिए चलना पड़ेगा ना चच्चा. चलो अब देखते हैं इस सिंक का क्या सीन है. साला जब से सिंक सिंक सिंक. ओह कस्टमाइज लुक्स. No way. All right. Hey, Sam. I hope... Nah, well, I'm sure you will. Dude, also, it's a bat... Just... You... One... Beast... Sam, I just reviewed the list of... You can rest easy. So, I'll... Tri-cruisers are now available for fabrication.
हो गई ना। Feels good. डिलीवरी अभी कर दूं? अरे सीधा सीधा ही जाना है। अरे पर बीच में वो यार वो मिलेगी ना, पानी की दिक्कत हो जाएगी उधर। वो कैसे क्रॉस करना है? ब्रिज सा कुछ तो है बट बढ़िया सा नहीं है ये तो बहुत ही बड़ी है जगह, तो इधर से तो भूल ही जाओ। चलो कल करते हैं इसको, है ना? आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल करेंगे इसको, ठीक है? अब बाय, ध्यान रखो भाई अपना, अपनी फैमिली का। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। सी यू गाइस ऑन टुमारो। जल्दी भाई लॉन्ग स्ट्रीम होगी, जल्दी क्या, संडे को मैं भाई बहुत जल्दी आऊँगा और बहुत देर तक करने वाला हूँ, मतलब लॉन्ग 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 स्ट्रीम ऐसे ही कोशिश रहेगी। अब मैं भाई हूँ, देखो सही बताओ ना, टाइम नहीं है और मन, और अगर रहता भी है ना तो साला उस दिन मन नहीं करता। और क्या बोलूँ मैं अब आपको, और ये जुलाई का महीना इतना काम है ना, इतना स्ट्रेस सा हो रहा है कि भाई कैसे होगा काम वाम, बहुत काम है यार, क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। अब कोशिश तो पूरी रहेगी भाइयों कि हो जाए सिस्टम सेट थोड़ा सा यहाँ से। और कहाँ देना है अपने को? इधर ना भाई, मैं तो भगाने वाला हूँ अपनी ये, इसको साला उठा के बाइक और सीधे रखूँगा यहाँ पे। तभी तो लिया भाई, इतना कौन चल के जाए भाई, गांड फट जाती है। मैं यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ जाओ, और वहाँ जाके पता चलेगा क्या सीन है। मेक्सिको में अभी तो मिलते हैं भाइयों, ठीक है? वीडियो शॉर्ट्स तो डाल ही रहे हम धीरे धीरे, है ना? और थोड़ा ये वाला महीना और मैं बोलूँगा थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जून का तो आप लोगों ने कराई है, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों जो जो लोग जुड़े हुए हैं अभी तक। जुलाई का और कर लो बस मेरे कहने से। अगस्त से जो कंसिस्टेंसी और जो कंटेंट दिखेगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ आप। फिर कोई दिक्कत नहीं हुई यार, देखो अभी बहुत नई नई चीज़ें हो गई हैं मेरे लिए और घर पे सभी के लिए ना। ऐसा हम लोगों को आदत नहीं है बिल्कुल भी, मतलब किसी को ही नहीं होती है, बट ये होता है कि वर्किंग मेंबर अगर कोई जाता है ना घर का, जो मतलब वर्क संभालता हो कुछ, तो भाई बहुत दिक्कत होती है।
और संभालता हो भी ना हो संभालता हो, लेकिन उसके रहने से ना, मतलब अगर कोई बंदा ऐसा है जो आपको वो रखता है, बिजी रखता है, या फिर घर पे बिल्कुल एकदम ढाल बन के खड़ा होता है, तो भाई उसके जाने से ऑब्वियसली सबको दिक्कत होगी। तो वही है, सब कोप अप करने में अभी दिक्कत हो रही है, और कोशिश यही है जल्दी रिकवर हो जाए, जल्दी जल्दी चीज़ें सॉल्व हो जाएं। मेरा भी बहुत चीज़ें अटकी हुई हैं, देखो घर का पूरा एकदम जो भी डॉक्यूमेंटेशंस रहती हैं इम्पोर्टेंट, जैसे आईटीआर रहती है वो जुलाई में जाती है, ठीक है। और मेरे को अभी दादाजी के बैंक अकाउंट्स भी बंद कराने हैं, वो भी है, ठीक है। और फिर जो गैस का वो जो होता है कनेक्शंस, उसके लिए भी शिफ्ट करा के आना है दूसरे नाम पे। और फिर मेरे को इन सबसे अलग अपना कॉलेज का भी देखना है कि भाई कॉलेज में कोई बढ़िया एकदम हो जाए सिस्टम। तो बहुत कुछ है यार करने को। तो वही है कोशिश की जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं सही, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दिक्कत आएगी बीटी एरियाज में। जो नॉर्मल वाले एरिया है ना, वो भी कोई दिक्कत नहीं होती, उससे भी भाग जाओ एक बार को। पर जो बीटी वाले एरिया आ जाते हैं ना, वो वहाँ दिक्कत बन जाती है। अभी तक बीटी वाला एरिया 2 जगह आया है अपने, और वो है एक ये वाला एरिया था, ये था, नहीं ये वाला एरिया था, ये एरिया था ना, हाँ यही तो था। एक ये वाला एरिया है, और तो कोई दिखा, और तो कहीं दिक्कत दिखी नहीं थी अपने को, और तो फिर यहाँ पे ही दिक्कतें थी ये जगह पे। कर लेंगे कुछ तो। एक रोड था ना यहाँ से कहीं, मेन जो है ना ये है, ये जो है ना ये बसड़, बस ये पार करनी है। देखते हैं कैसी है। मैं यहाँ जाके सेव कर लूँ, यहाँ जाके एक बार वो कर लूँगा मैं, अपना रिफ्यूल जो भी रहेगा। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे कल को। बाय बाय, ध्यान रखो गाइस।